Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the structure of DNA as well as we will also discuss the models of DNA. So let's move to the whiteboard. So now we will discuss about the structure of DNA. Structure of DNA. That is also a very important long question. So there were two scientists by the name of Maurice Wilkins. That was a male scientist, and Rosalind Franklin. That was a female scientist, a chemist, while he was a biophysicist. Clear? So the students, both of them, they used X-ray diffraction studies to give information about the structure of DNA. So that was one contribution regarding them, Maurice Wilkins and Rosalind Franklin. So they made the X-ray diffraction studies. And what is X-ray diffraction? फिजिक्स में आपने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि जब एक्सरेज जो हैं वो किसी सॉलिड सरफेस पे हिट करती हैं या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हिट करती हैं तो उसमें से पास नहीं कर सकती बल्कि डायफ्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, इधर उधर डायफ्रैक्ट हो जाती हैं। इसी तरह से इन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल लिया, डीएनए को जो है वो आइसोलेट किया और आफ्टर इट्स आइसोलेशन दे पास्ड द एक्सरेज थ्रू द, और उसमें से एक्सरेज को पास किया और उसके पीछे वो एक्सरे फिल्म थी, उसके ऊपर वो इमेज बना, एंड व्हाट दे फाउंड दैट इट इज़ लाइक दिस। सो वेरी फर्स्ट टाइम इस तरह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो इन्होंने डिस्कस किया था। इसकी मज़ीद जो डिटेल्स हैं दे हैव बीन शेयर्ड इन सेकेंड ईयर। क्लियर? नाउ अनदर स्ट्रक्चर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, that is Watson and Crick model of DNA. Clear? Watson Crick model of DNA. You have also studied in the 10th class. Clear? So these were two scientists, James D. Watson, his full name, and Francis Crick in 1953 on about 28th Feb. They presented the scale model of DNA. Clear? And they prepared it in the lab. So according to them, DNA is made up of two
polynucleotide strands that are coiled around each other in such a way that it forms a double helix. Number one, the Watson and Crick model. Number two, these two polynucleotide strands wound around each other in anti-parallel fashion. Means both these strands wrap around each other in opposite ways, in opposite direction. One is 5' to 3', and its opposite is 5' to 3' in this direction, like this. This is called as anti-parallel strands in the anti-parallel fashion. Clear? Moreover, these two strands are formed by outside sugar and phosphate backbone. बाहर की तरफ जो है स्ट्रिंग से बन रही इस तरह से, दिस इज कॉल्ड एज बैकबोन, और ये दूसरी बैकबोन, and inside are present nitrogenous bases. और अंदर की तरफ यहाँ पर अंदर वाले साइड पे मौजूद हैं नाइट्रोजनस बेसिस. Clear? So that was the third point. Now, these two strands are held together by hydrogen bonds or hydrogen bonding. Clear? हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, उसमें आपको याद होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसमें से जो कॉइल्ड और हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिक्स बनता था, अल्फा हेलिक्स लाइक दिस, तो ये भी हेलिकल स्ट्रक्चर है. तो इसमें भी हेलिकल जो स्ट्रक्चर है उसको, जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उसको किसने मेंटेन किया हुआ है? द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, अंदर की तरफ से उनको हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने आपस में जोड़ के रखा हुआ है नाइट्रोजनस बेसिस में. Clear? Another point is that adenine, that is abbreviated as capital A, is always paired with thymine. Clear? Abbreviated by capital T. And same like that, guanine, abbreviated as capital G, is always paired with or cytosine. Clear? Abbreviated as capital C. हमेशा प्यूरिन्स
पायरिमिडीन के साथ ही पैचअप बनाएंगी, पेयर अप बनाएंगी। क्लियर? कभी भी पायरिमिडीन के साथ पेयर नहीं बनाएगी, कभी भी प्यूरिन के साथ जो है वो पेयर नहीं बनाएगी। द रीज़न इज इस तरह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर है दैट बिकम्स अनस्टेबल। तो अल्लाह ताला ने इनके दरमियान जो है वो एक बैलेंस रखने के लिए, एक रेगुलर फैशन के अंदर बैलेंस रखने के लिए हमेशा जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है उसको सिंगल रिंग के साथ यानी कि पायरिमिडीन के साथ, प्यूरिन्स को पायरिमिडीन के साथ पेयर अप किया। क्लियर? एंड मोर ओवर डियर स्टूडेंट्स, there are three hydrogen bonds between guanine and cytosine. Clear? And just like that, there are two hydrogen bonds between adenine and thymine. Clear? So that is also important regarding the MCQs. So like this, we can show them up as guanine having 3 hydrogen bonds with cytosine and adenine having 2 hydrogen bonds with thymine. Clear? And in one turn, ये उनसे एक टर्न बन रही है यहाँ से शुरू होकर के और यहाँ तक, this one turn contains 10 base pairs. And the length of each turn, यानी कि एक टर्न की जो लेंथ है is 34 angstroms. Clear? And 1 angstrom is equal to 100 millionth of a centimeter. Clear? So here we go. So this is the net deoxyribose and carbon number 5 attached with phosphate, carbon number 3 again attached with phosphate. Clear? And this is deoxyribose. Or then this phosphate is again attached with the carbon number 3 of the other sugar, that deoxy sugar, and carbon number 5 having again the phosphate group like this. मैं सिर्फ यहाँ पर 2 को शो करूँगा ताकि आपको वो सारी बात समझा सकूँ। और दूसरी जो ये एक स्ट्रैंड होगी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कौन सी कार्बन नंबर है? दिस इज 3 प्राइम, ये भाई ये यहाँ पर 3 प्राइम के साथ फॉस्फेट अटैच है और ये कौन सी है? दैट इज 5 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक है, तो अपर एंड पे कौन सी फॉस्फेट किसके साथ अटैच है? 5 प्राइम के साथ। नीचे वाले एंड से किसके साथ अटैच है? 3 प्राइम के साथ।
तो ये वाली जो स्ट्रैंड बनेगी, दिस वन, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस डायरेक्शन में। क्लियर? और जो दूसरी स्ट्रैंड बननी डियर स्टूडेंट्स, दैट इज, अच्छा यहाँ पर इसके साथ अटैच्ड है, देयर इज अटैच्ड a nitrogenous base, carbon number 1, clear? Carbon number 1 having nitrogenous base, यहाँ पर भी मौजूद है, and at this carbon number 1, this is carbon number 1, और यहाँ पर भी मौजूद है nitrogenous base. Clear? So these are single ringed. I have drawn single ringed, and they are with the double ringed. It means the purines. Clear? And these are again attached with the sugar here. This is deoxy sugar, this is deoxy sugar, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 3 प्राइम, और 3 प्राइम के साथ यहाँ पर अटैच है द फॉस्फेट ग्रुप, और ये 5 प्राइम के साथ भी अटैच्ड है phosphate group, and this phosphate group is again attached at the 3 prime end, and again 5 prime end having the phosphate group like this. तो dear students, यहाँ पर देखिएगा प्लीज, look at here. तो ये कौन सा है? 3 प्राइम एंड, तीसरी कार्बन, हमने इसको इनवर्स बनाया, क्लियर, उल्टा करके बनाया। यहाँ पर बिल्कुल सीधी है, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पर जो शुगर है उसको हमने उल्टा करके बनाया क्योंकि ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल है। तो ये इसका 3 प्राइम एंड है और ये वाला इसका 5 प्राइम एंड। तो नीचे की तरफ यहाँ पर एक कौन सा एंड है? 5 प्राइम, ठीक है। तो ये नीचे की डायरेक्शन में इस तरह से बना हुआ है, इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, और यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऊपर की तरफ। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, लेट्स सपोज दिस इज थायमीन एंड दिस इज एडेनिन, so they have got 2 hydrogen bonds, and let's suppose this is guanine and this is cytosine, so they will have 3 hydrogen bonds. Clear? On and on. फिर इसी तरह से dear student, आप इसको ऊपर भी extend कर सकते हैं, नीचे की तरफ भी इसको extend कर सकते हैं। So this is what we call as the Watson and Crick model of DNA, the scale model of DNA. और दूसरी जो डायग्राम है जिसको एक्सप्लेन किया गया है लाइक दिस, द बैकबोन, और अंदर वाली साइड पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं यहाँ पर द नाइट्रोजनस बेसिस। जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही हैं, ऑल दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस। क्लियर? तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका। दिस इज शुगर प्लस फॉस्फेट, देख सकते हैं ये शुगर और फॉस्फेट, बैकबोन दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड, ये बाहर की तरफ है, और अंदर की तरफ ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस। क्लियर? और एक टर्न बन रहा है यहाँ स्टार्ट होकर यहाँ तक, उसमें कितने, एक टर्न के अंदर कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं? 10 बेस पेयर्स। और एक टर्न जो है ये वाली, इसकी लेंथ कितनी है? दैट इज 34 एंगस्ट्रम्स। क्लियर? या फिर अगर हम इसको नैनोमीटर में लिखें तो 34 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू
3.4 नैनोमीटर। और इन दोनों के दरमियान दो स्ट्रैंड्स जो हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 2 nanometer. Clear? And finally, dear students, there is another table which is presenting the amount of DNA per nucleus. Clear? Amount of DNA per nucleus in different cells of chicken and carp. कार्प कहते हैं फिश को, और चिकन क्या है? इट्स अ बर्ड। इन दोनों के दरमियान उन्होंने कंपेयर करके दिखाया है इन अ tabulated form. It is present on the page number 33. So here is the cells. यहाँ पर हम cells का कॉलम बनाएंगे, and over here a chicken. और एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स, बाद में मुझे बोलना चाहे, ये जो सी हम अमाउंट को कैलकुलेट करें दैट इज इन picograms. That is in picograms. So chicken, and then in the carp. कार्प किसे कहते हैं? फिश को। क्लियर? और इन चिकन और कार्प के मुख्तलिफ सेल्स के अंदर हम देखेंगे अमाउंट ऑफ डीएनए। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है अमाउंट ऑफ डीएनए इज फिक्स्ड। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अमाउंट ऑफ डीएनए फिक्स होती है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है। क्लियर? और हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और एक होते हैं जर्मलाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स जिनसे नॉर्मल हमारे बॉडी के सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, लिवर सेल्स, किडनी सेल्स, हार्ट सेल्स वगैरह वगैरह, और जर्मलाइन सेल्स जो प्रोड्यूस द गैमीट्स, ठीक है, द एग एंड द स्पर्म सेल्स। तो याद रखिएगा कि जो सोमैटिक सेल्स हैं जितने अमाउंट होगी डीएनए की उनके अंदर अप्रोक्सीमेटली उसका हाफ होगा इन द gamete cells. Clear? In the means in the sperm and the ovum. So RBCs में देखेंगे, इन दोनों के RBCs को कंपेयर करेंगे. Then we will go for the liver cells, then for the kidney cells, and also for the sperm cells. Clear? तो इन 4 डिफरेंट सेल्स के अंदर हम डीएनए की अमाउंट देखेंगे इन 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, कितने कितने पिकोग्राम्स इनके अंदर इनकी अमाउंट मौजूद है। This table has been given on page number 33 of our textbook PCTB Biology Class 11. So dear students, RBCs, chicken के जो RBCs हैं, they contain 2.3 picograms of our DNA. Liver contains 2.4, kidney contains 2.4, but the sperms contain 1.3 picograms. 1.3, तो approximately इसका हाफ बनता है। ठीक है, ये सोमैटिक सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल, लिवर सेल, किडनी सेल्स, दे आर द सोमैटिक सेल्स। सोमा से मीन्स बॉडी सेल्स, और दीज आर द germ cells, sorry, the gametes और germline cells। क्लियर? और इसी तरह से कार्प मीन्स फिश के अंदर आरबीसीज होती हैं 3.3 पिकोग्राम्स, लिवर के अंदर होती हैं 3.3 पिकोग्राम्स, किडनी के अंदर भी होते हैं 3.3 पिकोग्राम्स, और स्पर्म में होते हैं 1.6 पिकोग्राम्स। So it is obvious from this that somatic cells, they have 2n diploid number of chromosomes, and the gametes, they have 1/2 of the somatic cells. हम डीएनए की अमाउंट की बात करें, ठीक है, 1/2 gametes के अंदर हाफ होगा। So dear students, hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे आरएनए, द सेकंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।